change when it's a film by Imtiaz Ali? How does it evolve? Is it much more collaborative? I think I put in the same amount of hard work that I would put in any film, but of course, I think when it comes to Imtiaz sir, I think I completely leaned on him to guide me in this process. He, like everybody said on the stage, he knows so much about his characters. It's also because of the way he sees them, and I think he also understands human nature so well. That it's very interesting and exciting to sit across Imtiaz sir over like a dinner or a lunch and just understand what he's thinking. And just by conversation, there's so much that you can absorb. So I've always been like a sponge, that I just wanted to know more from him, whether it's about this film, about life, about anything. And I think that I would say that I'm a more far evolved person after meeting him and listening to him and hearing him, and now making him sound like very preachy, but we've had great and fun moments too, and he's very funny, I just want to say, for people who don't know, and we've had such a great time. So honestly, I'm only grateful for this opportunity, and I've learned so much from Imtiaz sir, and I hope I continue to do so. Hope is the word. I remember watching Amar Singh Chamkila in a theatre, and everyone was crying, and I saw some people going like on the same motion after seeing the trailer. My second question is for Manish sir. I couldn't see a lot of shade. हम सब जिया को जानते हैं ऐसा लग रहा है, एंड सबके जिया में बस गई है वो अपने पहले उस फ्रेम से. What do you want to say about that character and what kind of brief, because this gentleman here, इम्तियाज साहब ना बड़े बड़े आराम से अपने काम से प्यार करवाते हैं और फिर एक अलग टैंजेंट पे लेके जाते हैं. क्या बोलेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जिया का जो किरदार है उसमें जो सादगी है, जो सिंप्लिसिटी है और जो ऑनेस्टी है वो हमारे फिल्म में है. आई थिंक हर किरदार में है वैसे तो, पर आई रिमेम्बर जब मैं फर्स्ट टाइम इम्तियाज सर से मिली थी तब मैंने 2 घंटे आई थिंक सिर्फ बातें करी थी और उन्होंने कुछ नहीं कहा था, मैं सिर्फ बातें करे जा रही थी. और तब मुझे लगा था कि पक्का मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है इसके बाद, क्योंकि मैं उनको बहुत पका के चली गई थी. बट आई थिंक इट वर्कड इन माई फेवर बिकॉज माई कैरेक्टर इज समथिंग ऑल्सो लाइक दैट. एंड वो पकाती नहीं है, बट शी इज अ लिटिल बिट टॉकेटिव. And yeah, it's an honor and it is such a big privilege to work with Imtiaz sir, especially when he writes women in his films. They are so layered. He sees emotions and cinema just so beautifully from the lens that he sees it, and I'm just privileged to stand here on this podium with everyone. Rahman sir, thank you so much. I've always been a huge fan. I remember I wrote that essay to you on Instagram, but I'm a huge fan, and what an honor it is to just be here right now. Looking at this scene, it's an image you should never go away from. It's like a unique image. Thank you. Thank you, sir. Sharwari, just one more thing. Is Imtiaz साहब always in this zen mode या कभी कुछ डांटना पीटना कुछ होता है ऐसा, चिल्लाना सेट पे? कुछ दे दो मसाला please. Seriously, Yeah, actually. So he's always like this. so I think his best quality is his calmness, and he's so precise and. हंसरे क्यों हो? ये कौन सी टीम है? ये कौन लोग laughing? I think it's the AD team was not buying this actually, I think. No. I'm yet to make him हंसी यार. No, I'm yet to make you angry. No, but he's a gem, and whenever we're on set and he's in his element and he's directing us, it is actually one of the most precious feelings that I've had in my life. And मैं बता देता हूँ इससे पहले आगे बढ़े. यूजुअली क्या होता है, हम कुछ शुरू करते हैं उससे पहले सब बड़े बड़े हाइपर होते हैं. यहाँ इम्तियाज साहब 4 बार आके मुझे बोल रहे आराम से चिल कर, तू एंजॉय करना और सब होते रहेगा. सो दैट इज व्हाट दिस जेंटलमैन. Not now face to face, so I'm very losing my words. So you'd like to say something? You got a beautiful voice, Wow. and it's saying in him, he's a real singer. Thank you. Coming from Rahman sir, that is probably one of the biggest compliments I've ever gotten. in Will my you life. sing for other actors too? You know what? I don't mind if you're composing it 100%. डन. ये अलग यहाँ पे एक डील साइन हो गई है. एंड अब मैं इसके आगे कुछ नहीं पूछने वाला हूँ आपको, बिकॉज आई एम श्योर रहमान साहब कॉम्प्लीमेंटिंग यू सिंगिंग के लिए बात खत्म हो गई यहाँ पे. लेडीज एंड जेंटलमैन, द गॉर्जियस शार्वरी. जोरदार तालियां. वाओ.
especially the kind of romance you have depicted on screen. But one thing which we have also noticed कि आपके प्यार की जो अंत होती है उसमें कहीं ना कहीं दुख काफी होता है, बिछड़ जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है. Do you choose that precisely? Do you have any personal experience around it? What is the thought behind it? What a question! What a question to start with. I think आपका सवाल सुन करके मुझे लग रहा है I should see a therapist. मगर मैं जान के नहीं करता हूँ, मुझसे हो जाता है. Sorry about that. A lot of things that we do in this work is actually not guided by our intellect. ऐसा लगता है some story is coming and I'm just being, just the hand that is writing it. Really, पता नहीं यार. Honest answer is that. Thank you. And lastly, to my questions to Vedang and Sharwari, I have to definitely ask this, a fresh pairing, and when it comes to, going back to the vintage love, if both of you have to, speak your idea of. ये पूरी तरह से पार्टीशन पर पे थी और उसमें भी बहुत खूबसूरती से उन्होंने पार्टीशन की थी और आपका बहुत अच्छा किरदार आपने उसमें भी निभाया था. मेरा सवाल ये है कि अगर आप पिंजर से कंपेयर करें दोनों ही डायरेक्टर्स यानी डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हो या फिर इम्तियाज जी हो, उस वक्त वो दोनों ही पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन दोनों ने ही बहुत खूबसूरती से, जैसा आज इसमें भी दिखा कि उन्होंने पार्टीशन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया अपनी अपनी लैंग्वेज में. तो आप उन दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या पाते हैं पिंजर और इसमें? मानो जी पैदा तो मैं भी नहीं हुआ था तो लेकिन कंपेयर करना सही तराजू नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पार्टीशन को ही देखें 15 मिलियन लोग 12 से 15 7.5-8 मिलियन इस तरफ से वहाँ गए और 7-8 मिलियन वहाँ से यहाँ, हर एक की कहानियाँ हैं. यस वो लोग पैदा नहीं हुए थे लेकिन कहानियाँ सुनी हैं, और जिस इंसान को हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, दर्द समझता हो, वो ऐसी कहानियाँ बनाएगा. और क्योंकि ये इम्तियाज़ की फिल्म है, उन्हीं की बात करते हैं, वो दर्द समझते हैं, वो प्यार समझते हैं. आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको बिना किसी वजह के कोई थप्पड़ मार देता है, वो उस एहसास को समझते हैं. तो ये पार्टीशन से पहले अनडिवाइडेड इंडिया की कहानी है. पार्टीशन हादसा था, बंटवारा हादसा था, तो उससे ये हर रोज़ हो रहा है. ये ज़रूरी है पार्टीशन नहीं. आप उसके बाद 1990 ले लीजिए, कुछ साल पहले कर्नाटका में बेंगलोर में एक्सोडस हुआ, आज जो दुनिया भर में माहौल हो रहा है, तो जिस पे बीतती है उसकी पूरी जनरेशन इम्पैक्ट हो जाती है. बहुत आसान होता है कि चिल्ला के बोलना मारो मारो मारो, लेकिन जिस पे बीत रही होती है वो उम्र भर के लिए नहीं, उसकी काफ़ी पीढ़ियाँ उसका असर उन पे पड़ता है. तो कहीं ना कहीं बहुत गहरी सोच, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है? प्यार, मोहब्बत, इंसानियत. सो ये शख्स, जैसे वो ज़ेन की बात हो रही थी, इम्तियाज़ के साथ जब काम करने को मिला, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऑफ कोर्स डायरेक्टर टेक्नीशियन तो है ही, वो तो मतलब कितनी बार प्रूव करेंगे, लेकिन जो नसीर साहब जो कह गए, ये ऐसे डायरेक्टर हैं जो शॉट मिलने के बाद भी बोलते हैं अब ये तो मिल गया है, अब उसको वो मैच नहीं करेंगे, हम कुछ और करते हैं. तो आपका हाथ पकड़ के आपको एक अलग जगह ले जाते हैं जहाँ आप खुद नहीं गए होते. सो फॉर एन एक्टर इट वॉज अ प्रिविलेज. सो मैं यही कहूँगा, सो कंपैरिजन वुड नॉट बी राइट, बट ऑफ कोर्स दिस विल ऑल्सो बिकम अ रेफरेंस फिल्म, आई एम श्योर. Suddenly started working. I think it would be a lot like what Jia and Kinu's love is like. Less words, more spoken glance, more glances that are spoken, more fewer words. वो ऐसी जो आँखों ही आँखों में प्यार होता है, a promise that you keep forever, just things like that. Letters. Yeah,
that is something that's really missed now. Something about love letters is so romantic, and now we're in a generation of messaging and texting and WhatsApp, Instagram. So that innocence is something that was really pure back then, and that's something that you really see with Jia and Keanu. And I feel like, at least I can speak for myself, but I may also speak for my generation when I say that we also long for something like this, and that is why it becomes so exciting to see love like how it used to be. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, Grenelle, you're from Bollywood Babu. Vedang, my questions to you. Sorry, where are you gonna see? Yo. Hi. Hi. You're just 25, and I would say the youngest male lead actor in an Imtiaz Ali film. Oh, is that true? Wow. Congrats. Okay. I believe so. How Okay. does it feel to actually get this tag now? Ki you're the youngest male lead in an Imtiaz film. Well, it makes me feel young. And also very, very honored. I mean, to be part of an Imtiaz Ali film, even at the age of whatever, would have been a privilege. And well, this is a really interesting title to be the youngest. But I keep saying it. It's the most amazing thing that could have happened to me, especially this early in my career. And I'd just like to thank Imtiaz sir for that. Do you think that adds some unnecessary pressure in the long run? In the long run, I don't know. I don't see it like that. But definitely, I did feel the pressure when I was cast. I did feel the pressure when I heard I'm playing the younger version of Nasir sir, to be a part of a film in which such esteemed actors, veterans are there, Diljit Paji. And those things, definitely I took that pressure as a responsibility, and I hope people are happy. Rajat ji, But don't take the pressure of being the youngest, because Alia is bearing that. Yeah, exactly. See, yes, I know, hero, sir. Oh, hero, male, yeah, okay, sorry. Sir, please don't take this away from me. मैं भावना शर्मा. मेरा सवाल संजय सूरी जी से है, जो ऊपर थे और and then that whole journey of Imtiaz, Ishar, Rehman sir, Daljit, and Vedang Shalburi probably get an opportunity of working for the first time. My opportunity of working for the first time. So you just enjoy the process. We don't know. We are all excited. We love the story. We are excited that it should show great result. Ultimately, Janta Janardhan hai. But we enjoy the process, right? And so long as you enjoy the process, you only enjoy the process with few good human beings, and I only cherish that. Just talked about जनता जनार्दन सर. जितने लोग यहाँ पे हैं ना, वो तो डेफिनेटली अभी भी बोल ही रहे हैं. मैं वापस आऊंगा जितनी जल्दी ये फिल्म यहाँ पे आएगी. एंड नाउ मैं आऊंगा उनके पास, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनकी फैन फॉलोइंग अभी सुनी ली हमने मोहित साहब के लिए. Hi everybody. Thank you for being here, and little nervous, very excited to show you all our trailer. It's our labor of love, and I hope you all receive this love and feel the love that we've put into this. So thank you. Requesting the both of you to kindly be seated. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Vedang और